व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आज का क्वेश्चन जो कि आया है इंटरनेशनल फोरम से हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो है फाइंड केथ मिसिंग नंबर। फाइंड केथ मिसिंग नंबर, ये लीड कोड का आज का, इट इज द स्ट्रीक क्वेश्चन एज वेल, so you have the plus point of that. If you watch this video, then you will be able to solve the streak question with good time complexity, along with the explanation of the whole solution that you will be getting from this video. Okay, so finding the kth missing number, this statement itself is a self-explanatory that what the question is expecting from us, but still हमें statement पूरी पढ़नी है, और उससे भी पहले we will go to the relevance of the question, because until and unless we are not so sure that this question is particularly relevant for us, we are not going to do that. And it makes sense because you don't have the time, extra time, to practice on those stuff that you are not sure whether they will come in the interview or not. And that's perfectly fine. So हम इसकी significance discuss करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं इसकी कैटेगरी बताना चाहूंगी। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन तब भी इसका सक्सेस रेट जो है वो 60% रहता है। अब ये 60% क्यों रहता है, बाकी लोग कहाँ पर 40% मार्क खाते हैं, दे बेसिकली फेल जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट द इंटरव्यूअर, दैट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स अस टू अचीव, वो वहां पर मार्क खाते हैं, इसलिए सक्सेस रेट जो है इसका वो 60% है। ये इजी क्वेश्चन है। सो अगर आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, आप नए प्रोग्रामिंग में आए हो, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पर जो 2 साल प्रोग्राम्ड एक्सपीरियंस्ड है, उसमें क्या फर्क होगा, आपने अटेम्प्ट करा, आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लाई n², पर जो एक्सपीरियंस बंदा है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n या log n तक भी ला सकता है। तो यहाँ n² से लेकर n log n या log n तक का ये जो डिफरेंस है, ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड दिस इज व्हाट इटसेल्फ एवरीथिंग क्रिएट्स 60% एंड 40% का डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके, सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन है क्या, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि ये आया कितनी बार है। This question has been asked in the FAANG companies in past 6 months around more than 30+ times. Again, FAANG companies, Facebook which has been turned to Meta, तो हम इसे कह सकते हैं MANG companies, Meta, Adobe, Amazon, Netflix, Google में ये पिछले 6 months के अंदर इसका स्टार्ट 30+ टाइम्स का है। इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको फर्स्ट या सेकंड जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस
to be as a brainstormer question. What these companies follow the pattern in their interview is that they start with an easy question first, and then they'll give you the major or the big question on which the decision of your selection or rejection is dependent. Okay, so अगर ये question आपका booster में आ सकता है, like interview booster first thing, अगर आपके ये उनमें आ रहा है, what do you say, वर्चुअल इंटरव्यूज के अंदर. अदरवाइज अगर ये फोन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, बिकॉज फोन इंटरव्यू में दीज पीपल आस्क इजी क्वेश्चंस. बेसिकली दे वांट टू नो यू दैट आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग जस्ट बाय लिसनिंग, so that they can test your listening plus problem solving skills. If you are able to listen nicely, you will be able to do it nicely as well, and that's what creates the whole difference. So this question you can expect like as the start of the interview or during your virtual phonic interviews or the telescreening interviews, where a person or a software engineer just interacts with you and asks some brainstorming questions and get to know more about yourself and get to know more about you basically. Okay, so ये significance इसकी 30+ times है in FAANG companies. Now let's go to what question is asking and what we need to do in that. So I will erase this first and now let's discuss. Just a minute. Yeah, so this question says find the kth missing number. Missing number, what that term basically means is given an array of positive integers, okay, sorted in a strictly increasing order. Strictly, what does strictly means here? Increasing order तो normally पता ही है, पर strictly का क्या मतलब है? Strictly basically means that duplicates are not allowed. Strictly here means that duplicates are not allowed. Okay, strictly here in the input also, in the example you can see 2 3 4 7 11. अगर we are expecting this, अगर हमारे पास इनपुट ये होता तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. ओके, सो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जो है ये है कि डुप्लीकेट्स हमारे पास अलाउड नहीं है. एंड वी आर गिवन एन इंटीजर के एक एक्स्ट्रा इंटीजर है. इन दिस केस इट वाज 5th. ओके, in this case it was 5th. Just a minute. In this case it was 2. I have missed that part. No problem, let me add that here. Just a minute. Where k is equals to 2. Okay, तो हमको ये दिया गया है k की वैल्यू सेकंड, हमको सेकंड निकालना है, सेकंड मिस्ड इंटीजर इन दिस एरे बेसिकली. एंड kth पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव कंसीडर करने का सवाल ही नहीं उठता. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है. इट दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे. तो पॉजिटिव एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करो तो 2 1 मिसिंग है इसमें. ओके, 2 3 4 है, 5th मिसिंग है इसके अंदर. तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ गया? 5th, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो ये चाहता है ये क्वेश्चन दैट आपको एक एरे दे रखी है, आप 1 से स्टार्ट करो. जो एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप काउंट बढ़ाते जाओ. एंड व्हेन यू सी दिस आउटपुट, वो व्हेन दिस काउंटर वाज इक्वल्स टू k, देन यू विल डिस्प्ले दिस आउटपुट बेसिकली. ओके, तो इसका बहुत ही इजी सिंपल सॉल्यूशन है which is efficient also with respect to time and space. Okay, so let's discuss that. The possible solution of this could be, firstly आप एक लूप लगा सकते हो, like brute force naive approach is that आपने एक लूप लगाया for I is equals 1 basically and I is let's say while loop लगाया है, while okay I is greater than 0 and initially you have initialized I with 1. This I is what? These numbers. Okay, तो आपने चेक करा इस एरे के अंदर एरे ऑफ I क्या ये एग्जिस्ट करता है. तो आप ये क्या करोगे, अंदर आपने एक लूप लगाया for j is equal 0, j is less than n,
एंड j प्लस प्लस, ठीक है। और अगर ये i के बराबर है तो आपने पूरी एरे आइटरेट करी, अगर ये i के बराबर नहीं है तो आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आएगी n²। नाउ इसको अगर और ऑप्टिमाइज करना है, पर तब भी ये n² रहेगी। ऑप्टिमाइज्ड n² अप्रोच विल बी, अगर i जो है, एरे ऑफ i जो है मेरे पास, अगर वो ग्रेटर देन है i के, तो मैं इसे ब्रेक कर दूं, तब भी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड वर्स्ट केस देखी जाए तो n² ही रहेगी। पर मैं इसको O(n) तक लाना चाहती हूं या ला सकती हूं, दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल। तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? यूजुअल तरीके क्या होते हैं इन चीजों के, व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर्स, तब हम यूज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप, तब हम यूज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप। पर सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप है क्या? It's an hash map implementation. Hash map is available in Java. A similar type of implementation is done here in C++ with the name unordered map. Unordered map is nothing but it's like a dictionary where, dictionary as in Python, here you have a pair of key and value, where key is unique, values can be duplicate. This unique key is basically used to check or to point out on its value. यहाँ इस केस में, for this case, these array will be 1, all will be 1, all will be 1, all will be 1, all will be 1. Okay, so values can be duplicate but keys cannot. Keys will never be duplicate because it is a strictly increasing order. Value will always be 1 because it is strictly increasing order. Okay, but what this will help us in? This will help us in basically to get the access time O1. Okay, basically to get the access time O1. Okay, so here 2 3 4 7 2 3 4 7 11, we stored it in an unordered map in the first place. Okay, now what we'll do is that we'll run a different loop. We'll run a loop here for while I will be initially 1. Now what we will check is, if m of I equals 1, okay, then continue, means it exists. Else what we will do is, we will take another variable j, this will correspond basically to this kth value, else j plus plus. If j is equals k, then we will, here I'll write, we will return I, okay. Otherwise, after this else and everything, we will do I plus plus. Okay, so this will be the whole approach. Let's now write it so that you can have a better understanding. Again, if you have any doubt with respect to understanding, question, what it is asking, how to do, what's its significance, any type of question that you have, post it in the comment section and I'll definitely try to respond it on time as soon as possible. Okay, so now let's come to the solution part. What we had discussed, we'll be going to write it here. So we will run 2 loops. In the first loop, we will construct the hash map where array elements will serve as key and their count, which will always be 1, will serve as value. Okay. In the second loop, we will run from I equals 1 and we'll check whether it exists in the map or not. If it exists,
then we will continue the loop, else we will increment j, which is nothing but the variable which will be corresponding to the value k. If j is equals k, then we will return I from the loop, else we will continue the loop by incrementing I. Okay, the time complexity of this solution will be O of n, and the space complexity of this solution will be O of n. Okay, so this is the solution which we had discussed, which we had explained. We'll run two loops. First loop, we'll just construct the hash map, and second loop, we will use that hash map to check whether the element exists or not. If it doesn't exist, we'll increment j, and when j is equals k, then we'll return I from the loop, else we will continue by incrementing I. The time complexity is O of n, and the space complexity is also O of n, which is the efficient one. Another, if you have any other solutions which is more efficient, good, and you can use that. Now the explanation part of the video is completed. If you have any questions, any doubts, anywhere, in any part, at any point, just drop that in the comment section, and I'll definitely try to respond that on time. And now let's move on to the good part of the video, which is like, I am really excited for that. I always am excited for that. And that is coding part. Let's first understand this problem here, how they have described it, and then we'll move to the coding section of this. So firstly, it is a streak question. Here you can see this question is 1539, Leetcode platform, category is easy, companies are logged, but these are asked in the FAANG companies. Given an array of positive integers sorted in a strictly increasing order and an integer k, return the kth positive integer that is missing from the array. Array is 2, 3, 4, 7, 11 and k is 5. The output is 9. How? 1, 5, 6, 8, 9 are missing, and 9th is the 5th number. Similarly, 1, 2, 3, 4, kth 2, which will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6th is the missing number. Okay. So this is how. So now let's move on to its coding part. Let me erase this and let's go on and do the coding of it. So as we have discussed, I will be coding the same thing at any point. Again, if you have any doubt, don't hesitate to mention it in the comment section. I'm declaring a variable n, which will be nothing but storing my size of the array. Then I'll be declaring an unordered map. Why unordered map over an ordered map? Because insertion time is less in it. Also the access time is O1 in both the cases. So insertion time is less. So why not using this over the ordered map? Okay. So here I is equal 0, I is less than n, I plus plus. And here we'll increment, which will always be 1. Now let's take I will be 1 here. Now if m of I is equals 1, we'll do nothing basically. If m of I is not equals 1, okay, then j plus plus. And if j is equals k, then we'll return I. Okay, here we'll do I plus plus. Here we can return -1, which is like nothing, and this condition will never arise. And this is such a short and simple code that could be done for this problem. So here we had run a loop I. If m of I is not equals to 1, means it doesn't exist, then j plus plus.
and if j is equals k, then we'll return the I. Okay, else we are incrementing it and then we are returning -1. This condition will never arise, but just for the sake of the function, because it returns it basically expects us to return something, so we can return 0 as well. And now let's try run it, hoping there will be no errors, and yes, it has been passed. So now let's go ahead and submit this and see what results it will give us. So firstly, it was a streak question, completion streak, 1 day, consistency is key, see you tomorrow. So if you also get access to any of these streak questions like this, you will get this pop-up message which looks so nice, and this coin is like a gold coin that is rotating. This is also like something very charming and nice. So yep, now it comes 12.12 and 5.24. Let's submit it again and you will see a different number totally. 53.33, which is like, okay, we are in a good stage compared to the previous one. Again, so just a minute, this time it hadn't changed. What is this happening on? I guess Leetcode server is down. 36.7. Sometimes it had written 56, sometimes 60, and now stuck on 36. Next could be 16 or something. So milliseconds are also changing. I think there is some problem with the server, but yep. So this could be the possible solution to what we can give for this question, and you will be able to clear this because this solution itself is an efficient way to approach this problem. It could be not just the bestest thing, but it is one of the ways. In coding problems, there are number of ways, ample of ways to solve one question. So I won't say that this only is the bestest solution or the solution that is possible to this problem. I won't say this thing, but yeah, this is also a solution which you can definitely use it in your interview, and it will land up you clearing that if this is the only question in the interview. Okay, so now let's move on to the heart of the video, which is our bonus tip section. So don't think of going anywhere and stay tuned because bonus tip section is coming. Hey guys, so we have come to the bonus tip section of the video presented by Programming World channel by मुस्कान गुप्ता. और आज की बोनस टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, एफिशिएंट, बेनिफिशियल, जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो सब होने वाली है बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी. आप अगर कहीं पर भी जाते हो, दिस इज कुड बी द जनरल टिप दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, एंड दिस टिप विल नेवर लेट यू फेल. ओके, इसके हमेशा सारी चीजें सिर्फ पॉजिटिव्स एंड पॉजिटिव्स ही हैं, कोई भी नेगेटिव है ही नहीं. एंड दैट बोनस टिप इज try to interact with as much people as you can whenever you get chance. जहां मौका मिले उसे गवाओ मत. Try to interact with people, go ask them, do hi, hello, tell them about yourself, get to know about themselves, and just this is how you will start networking and you will get interaction, and this is how you expand your network. Basically, the significance of network is so important, and there are many significances of it that if I start explaining them in this video, it will easily extend up to 1.5 hours, which is a lot time. And this is the importance, the significance of networking. It is really important. So try to interact, बातचीत करो जहां आपको जो लोग मिलते हैं उनसे. बहुत लोगों के अंदर डर होता है, दे आर एक्सट्रोवर्ट्स, सम आर इंट्रोवर्ट्स, जो नहीं बात कर पाते हैं, जो इतना एफिशिएंट नहीं होते हैं आगे बोलने में, जो कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी के साथ बात करने में. इट हैपन्स, इवन आई एम ऑल्सो दैट टाइप, बट all things change when you put some effort onto it, and it is not so hard. Try thinking this way.
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको अच्छा जवाब नहीं मिलेगा दूसरी साइड से, बट आपके दिमाग में, आपके दिल में ये चीज नहीं रहेगी कि मैंने कोशिश नहीं करी, अगर मैं कोशिश करती सो वी कुड बी लैंड अप विद बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये जो अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन कहीं से नहीं मिलती, लिटरली किसी मार्केट से नहीं मिलती, किसी बड़े से बड़े शोरूम से नहीं मिलती, किसी मॉल से नहीं मिलती, ये सिर्फ आपके खुद के एक्शन से मिलती है। सो यूटिलाइज दोस एक्शंस, पोर्ट्रे देम इन अ वे, उन चीजों को ऐसे करो दैट यू योर सेल्फ फील सेटिस्फाई अबाउट इट, वट एवर यू हैव डन एंड वट एवर यू विल डू। Okay, so this is very important, and I cannot like explain it in words how much important it is, and the benefits of this, because without benefits nobody do anything। जब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है तब तक हम उसे क्यों करेंगे। ओके, अगर खाने के फायदे नहीं होते तो हम शायद खाना भी नहीं खाते, या एक बारी को खा सकते थे बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, पर अगर इसके फायदे नहीं होते तो हम नहीं खाते। अगर पढ़ने के फायदे नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते। ओके, पढ़ते क्यों है लोग? बिकॉज पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब यानी कि अच्छे पैसे, अच्छे पैसे यानी कि अपनी फ्रीडम, अपनी फ्रीडम यानी कि अपना घर, अपनी गाड़ी और अपनी सारी लग्जरीज, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, सो इस टिप के क्या फायदे हैं उनकी बात करते हैं। लग्जरीज तो आई नो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अचीव इट इन वन और द अदर वे एट पर्टिकुलर और एट अ लेटर स्टेज इन योर लाइफ। ओके, सो अभी इसके फायदे डिस्कस करते हैं बोनस टिप के। जस्ट शिफ्ट द फोकस टू हेयर एंड द फायदे और द इम्पोर्टेंस और द what I should say, the benefits of this bonus tip is it will increase the chances of your success. The more the people you know, the more are the chances that you will definitely land up with your goal succeeded in the way you want. Okay, जो भी आपका गोल है, whether it is getting a placement in a good company, whether it is like getting your book published, or whether it is like releasing your song or trying to be an actor, everything it will be able to do. There are more chances because now you know more people. More the people you know, more will be the chances, because it can happen that those people like hold a significant position in the decision whether you can be in that industry, you can be in that role or not. Okay, सिंपल सी बात अगर इसको लेमन भाषा में कही जाए तो अगर आप किसी को जानते हो किसी एक कंपनी के अंदर, ओके, किसी कंपनी में अगर आप किसी को जानते हो तो यानी कि आप उस कंपनी के लिए बिल्कुल नए नहीं हो, यू ऑलरेडी नो समवन जो वहां पर काम करता है। ठीक है, तो आपका प्लस पॉइंट ऑलरेडी बाकी 1000 1,00,000 लोगों में से आपका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप एक जने को जानते हो जो वहां काम करता है। ठीक है, तो अगर वो सीनियर पोजीशन पर है, लेट्स से अगर वो सीनियर पोजीशन पर है, तो वही बंदा है जो आपके इंटरव्यूज कौन लेगा उनको मॉनिटर करेगा, इंटरव्यूज में क्या क्या पूछेंगे लोग उनको मॉनिटर करेगा, एंड इफ ही इज योर गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, देन ही विल बी एबल टू टेल यू दोज थिंग्स। ओके, कि ये क्वेश्चंस या इन बेसिस पर यू विल बी एक्सेस्ड, सो यू कैन प्रैक्टिस अप देम। This is not something which is encouraged, but it happens. Okay, तो यहाँ पर when you already know what type of questions or on which particular area in the data structure this company focuses, then there are more chances of your success. You already know how the work culture is, how the people is, what will be the interview process and everything. You are already aware of that, so everything for you will not be a surprise, and that is something which is like, it's not everyone's piece of cake, I should say. And the next benefit of this is you will feel motivated by listening their stories. Now this benefit completely depends on your personality, what type of personality you carry. If you feel happy by listening to the others people's success story, then you will feel motivated. But if you are a person who gets jealous very easily with the others people's success, then this will work in the opposite way. Okay, you will feel demotivated by listening to their success stories. So personality, I will say, and I'll prefer have a positive personality. That is, by listening someone's success story, first you should feel happy for them, you should congratulate them for their achievements,
and you should be happy from your heart that they had done something, they had achieved something. This is something that makes the difference and that creates the difference. When you feel happy from inside, the other person can get that vibe. And seriously, everybody is hungry for that vibe, because right now in today's world, this vibe is not something that can be easily found, because everybody wants to be ahead from the other person in any way, in any manner they can. Okay, तो ये चीज आपको नहीं करनी है. Have a positive mindset, and then positive things will definitely come to you. If they are not coming, hold on and take a deep breath. Okay, miracles don't happen in a day. Good habits take time to develop. Success is not just one day, what you say, one day luxury. It is a luxury that you will enjoy for years and years. So when you are developing something that will last for years and years, it will definitely take time. Okay, जितना अच्छा खाना बनाना चाहते हो उतना ज़्यादा टाइम भी आपको देना पड़ेगा. Okay, तो सैड नहीं होना. Feel happy, see others people, like interact with them, get to know about their success, about their stories, and it will help you. It will also motivate you to perform your best. और आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होगी ही इससे, वो अलग बात है, वो एक अलग ही प्लस पॉइंट है कि लेट्स से आपको प्रोग्रामिंग में सिर्फ 10 डेटा स्ट्रक्चर पते थे जो कंपनीज पूछती हैं, पर आपने किसी से बात करी और उसने बताया कि 11वां स्ट्रक्चर भी है विच इज जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस, और तुम इसको यूज करो तो इजीली सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैडंट नो, पर आपको ये चीज अब पता है, सो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर इंटरव्यूज. Okay, so this is the way how the networking thing and everything comes up. And with this statement, I would like to end the video. So we had reached the end of the video. So if you like today's bonus tip, programming question, explanation, each and everything, then do not forget to like, share, comment, and subscribe to the channel if you are new. Share it with your friends, as sharing education is really a good deed. And at this COVID time, when still some people are doing work from home or not, but still now it has actually, I should say, it has become my habit to say stay safe, stay healthy, because that's the only mantra that you can do. अगर सुरक्षित हो, जिंदा हो, तभी ये सारी चीजें हैं. तो सुरक्षित रहो, सेहतमंद रहो. And yeah, so मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all, guys.